So dear students, welcome again. As you know that we are discussing this topic morphology of leaf. तो उसमें हमने लगभग 3 लेक्चर हमने लिए इस पर डिस्कस किए हैं. तो उसमें मैंने बता दिया आपको पहले लीफ क्या होता है, उसके बाद मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ लीफ बता दिए. एक तो मैंने लीफ की मॉर्फोलॉजी बताई, यानी पार्ट्स पढ़े हमने, पार्ट्स ऑफ लीफ. सेकंड उसमें हमने वेनेशन पार्ट डिस्कस की. थर्ड फाइलोटैक्सी, ये गोर एज डिस्कस फाइलोटैक्सी, ये गोर एज डिस्कस ऑफ रिजन. नेक्स्ट तो पता है टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़े सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ पता पेजस मज हाय में सिंपल लीफ क्या गई, कंपाउंड लीफ क्या गई. तम पतन तुझे नेक्स्ट टॉपिक मॉडिफिकेशन बने में मॉडिफिकेशन is a process and it is that process where some changes take place in the structure of a leaf. जो लीफ है इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं, तो तभी ये सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करता है. मतलब मैंने और प्राइमरी फंक्शन तक करनी है, मगर कुछ सात अत लीफस रूटस स्टेम या प्लांट्स कुछ पार्टस प्राइमरी फंक्शन कुछ सात सेकेंडरी फंक्शन कर तम सात मॉडिफिकेशन. तो लीफस तम सात मॉडिफिकेशन गसन. अत बने मे गोची मॉडिफिकेशन टेंड्रिल, याद टेंड्रिल. नाउ द सपोज प्लांट, दिस इज लीफ, दिस इज प्लांट. देखो ये प्लांट, दिस इज लीफ. कुछ सात ये प्लांट अमुक सिस्टम वीक. समटाइम्स क्या होता है, ये प्लांट का सिस्टम वीक होता है, तो उस वक्त लीफ जो है इसमें मॉडिफिकेशन होती है, स्ट्रक्चरल चेंज होती है, तो ये टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है. जब प्लांट का सिस्टम वीक होता है, ये इरेक्ट नहीं रह सकता है, तो उस वक्त कुछ प्लांट्स में, फॉर एग्जांपल हम लेंगे पी प्लांट. पी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप उस पर अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे पी पर, तो वहाँ देखेंगे उसके लीव्स जो हैं, leaves get converted into tendril. Kashik particular rot banan chase. Those tendrils get coiled against any kind of support. ये support के साथ coil करते हैं ताकि ये plant जो है इरेक्ट रहे. So this is called as tendril. तो tendril में क्या होता है, कभी whole leaf convert tendril में होता है. तो ऐसा दिखता है कुछ साथ जो plant leaf, it whole leaf gets converted into tendril. तम साथ जिसमें whole leaf tendril, that is called as whole leaf tendril. whole leaf is राठस मज कन्वर्ट. तो कुछ साथ अगर तो याद आए रात हाय में तो बन गए बस फील्डस मज मे हाय तक प्लांट्स में तो स्टिप्यूल. याद है कल मैंने वो स्टिप्यूल दिखाया आपको. स्टिप्यूल मे वन लीफ किस बेसस पे स्मॉल माइन्यूट लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन, दैट इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल. ये स्टिप्यूल प्रोटेक्शन दिवन. कुछ सात ये मॉडिफाई गसन लीफ बनान तो फोटोसिंथेसिस कर. पी प्लांट्स लीफ बन टेंड्रिल, तो स्टिप्यूल बन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तम पत फोटोसिंथेसिस कर. गो कुछ सात स्टिप्यूल टेंड्रिल बन, कुछ सात स्टिप्यूल टेंड्रिल बन, तथ स्टिप्यूल टेंड्रिल, दैट इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल टेंड्रिल. आगो ये होल लीफ गस कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल, ब्याक गो ये स्टिप्यूल गस कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल. ठीक. कुछ सात पीटियोल, कुछ सात प्लांट पीटियोल गसन कन्वर्ट कत मज राठस मज टेंड्रिल्स मज. sometimes petiole of the plant या leaf gets converted into tendril, that is called as petiole tendril. That is called as petiole tendril. His function is they coil around a support and keep plant erect. And tendril function क्या है? They coil
around a support. Duck razman duck divan ya baaki duck divan. You rot is on you tendon, it gets coiled around the support. Taki plant it will remain erect. The leaves should get exposed towards sunlight to perform photosynthesis. We get a modification. This is called as tendon. In case of deserts, तो डेजर्ट में क्या होता है, वहाँ कैक्टस होते हैं. तो कैक्टस में ये लीफ जो होता है ये मॉडिफाइड, गेट्स मॉडिफाइड इनटू माइन्यूट स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जांपल स्पाइन्स. कैक्टस वने में रहा और तो ओपन शिया युस एस गारे ऑर्नामेंटल पर्पस खतर सुति आसन गमलन मज लगावन छ लगावन सिस. दैट इज कॉल्ड एज ओपन शिया. ती ओपन शिया इजन आसन छु इजन यम these parts यह बासन जन लीफ लाइक स्ट्रक्चर मगर यह मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. अत प्लांटस मज कैक्टस स्टेम गसन कन्वर्ट इनटू लीफ बनावन सो फ्लैट स्ट्रक्चर्स. अत फाइलोक्लाड. दैट इज कॉल्ड एज फाइलोक्लाड. when the stem of a plant gets modified into thick green leaf-like structure, it is called as phyloclad. It is called as phyloclad. When in some plants, for example, in some cactus, yeah, open shea to say example, the stem gets converted to thick green flat leaf-like structure. This is called as phyloclad. The amsatan leaves assumption, them convert into spines. In deserts there is scarcity of water and high temperature. वो ये प्लांट जो होता है ये अपने अंदर मॉडिफिकेशन पैदा लीफ में मॉडिफिकेशन करता है. तो लीफ, क्योंकि लीफ में क्या होती है, ट्रांसपायरेशन होती है, तो लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर के लॉस ऑफ वाटर के वाले ज़्यादा लॉस ये प्लांट फंसे. सो इन दैट केस द लीफ गेट्स रिड्यूस्ड इन साइज. इट फॉर्म्स अ माइन्यूट स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर. सो दीज आर कॉल्ड एज स्पाइन्स. These are called as spines. वो अम सातन लीफ फंक्शन कर स्टेम अत फाइलोक्लाड. क्लियर. वो एग्जांपल क्या लिखो ओपन शिया, OPENTIA, ओपन शिया. ये डाक मॉडिफिकेशन कैसन प्लांटन मज लकट बोन तिमन एहतमार तिम ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं वो उनको डैमेज करते हैं, खाते हैं, ख़त्म करते हैं. तो उस वक्त उन प्लांटों में जो लीफ है, दिस लीफ गेट्स कन्वर्ट इनटू थॉर्न्स. थॉर्न क्या कौशिक क्या थॉर्न्स वन कुंड. एंड इन सम प्लांट्स लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स. व्हाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स. जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनसे बचने के लिए, इनकी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लीफ जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स. सो रिड्यूस प्रोटेक्शन. क्लियर. या फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स या है कुछ एनिमीज थी लिखे. सो दीज आर कॉल्ड एज थॉर्न्स. तो कुछ और प्लांट्स होते हैं यहाँ पे. सम प्लांट्स दोज आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवर्स. इंसेक्टिवर्स प्लांट्स मतलब क्या प्लांट तिम हेकान पानस मज नाइट्रोजन डिफिशेंसी तिम हेकान नाइट्रोजन असल पे एटमॉस्फेयर या बाकी एवेलेबल कर यह हेकान यूटिलाइज कर कहें. सो समटाइम्स इन दोज केसेस दे ईट इंसेक्ट्स. तिम इंसेक्ट्स यूटिलाइज कर इंसेक्टों पे तिम नाइट्रोजन डिफिशेंसी क्लियर कर या ओवरकम कर. तो तिमन मज कर plant that is called as pitcher plant. That is called as pitcher plant. A plant called as pitcher plant. इसमें क्या होता है, इसका लीफ जो होता है ये लीफ इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू पिचर लाइक स्ट्रक्चर. पिचर को कश्मीर में क्या कहते हैं, नोट आसन.
note just like that ये leaf is onto this gets converted into this pot like structure, we call it as pitcher. यहाँ पे एक लीड हो this called as ये, this called as pitcher, this called as pitcher. जब इंसेक्ट इस पे होता आता है, क्या इंसेक्ट जो फूड खाता आसन जब वो इस पे आता है तो उसको लगता है मैं यहाँ से कुछ खाऊं, सो घुस जाता है किसमें, पिक्चर में घुस जाता है. जब इंसेक्ट इसमें घुस जाता है पत्ते लीड कर बंद, इट क्लोज इट्स लीड, तम पत्त एंजाइम्स रिलीज कर डाइजेस्ट कर इंसेक्ट्स. सो दिस इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवर्स प्लांट. एग्जांपल क्या लिखिस, पिक्चर प्लांट. या ब्याह लीफ ब्लेड्स, लीफ ब्लेड लीफ ब्लेड, they get converted into blade like structure, बराबर blade like structure. यम साथ इंसेक्ट ओतस वातन छु, इंसेक्ट ओतस वातन वन तो प्लांट इत पे तामत वन तो फॉर एग्जांपल यम साथ इंसेक्ट छु तम ब्लेडन पे यह कर बंद शटन, इंसेक्ट अंदर बंद कर तम पत्त अम्स मज कह एंजाइम्स रिलीज कर इंसेक्ट डाइजेस्ट गन, ताकि नाइट्रोजन डिफिशिएंसी सह ओवरकम कर. सो दीज आर कॉल्ड एज insectivorous plants. These are called as insectivorous plants. So this is called as modification. वो modification what is tendril, चाहे leaf कैसे convert into tendril, stipule कैसे convert into tendril, या petiole कैसे convert into tendril. दोइम spines. Open shear, leaf gets converted into open shear, this spine-like structure. But in some cases, leaf gets converted into thorns to protect itself. What this one is called as modification of leaf. This is called as modification of leaf. Now, functions of leaf. Functions of leaf. Functions of leaf. ये लीफ जो है कौन कौन सा रोल ये परफॉर्म कर या कौन सी फंक्शन परफॉर्म इस प्लांट में करता है. तो जहाँ तक फंक्शन का ताल्लुक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय दिस लीफ. वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी फंक्शन. वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी फंक्शन. वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी फंक्शन. Second is called as secondary function. Secondary function या accessory function जिसे कहते हैं. तो प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है, इट प्लेस मेन फंक्शन इज फंक्शन लीफस परफॉर्म करनिश. सो नंबर वन, इट कैरीज फोटोसिंथेसिस. इट कैरीज फोटोसिंथेसिस. में वे फोटोसिंथेसिस पढ़ टॉपिक डिटेल्स में पढ़. तो फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस दैट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल बाय प्लांट्स. तो फोटोसिंथेसिस पे सारी लाइफ सस्टेन करना. सो फर्स्ट इज दैट दे कैरी फोटोसिंथेसिस टू मैन्युफैक्चर फूड मटेरियल. नंबर टू, दे परफॉर्म ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन क्या हो, लॉस ऑफ water in the form of vapors. As one plant, this plants yem sathan water absorption gasan, patil temperature increase gasan, ya yem leaf yem shi water nebar nearan through a pore. That pore is called as stoma. Agar akh nimo stoma, agar vare nimo to is called stomata. Nimo stomata ki nebir shi water nearan, but in the form of vapors. देखा है कि नहीं? तो शौक नहीं. मान लो आप तो ठीक ना, मैं वैसे ही समर आने वाला है, बहुत गर्मी होगी. अब आप जाओ फील्ड में जाओ, वहाँ देखो लीव्स, तो आप देखेंगे लीव पर वो वेपर लाइक अपीयरेंस बी ऑन द होल लीव. मतलब आप सब लीव्स पे. सो दैट इज ट्रांसपायरेशन ऑफ क्या ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस. हालांकि ट्रांसपायरेशन वन इट इज अ नेसेसरी इवर. ट्रांसपायरेशन रिजल्ट्स लॉस ऑफ वाटर, मगर प्लांट्स रोल प्ले कर गो यह मदद कर वाटर एब्जॉर्प्शन. क्या हर वाटर लॉस वन तेली
नंबर 1 नंबर 2 ये इस प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर। क्या आपने देखा जब हमारी बॉडी में पसीना आता है, ये पसीना क्यों आता है? तो सनी मिथन और के साथ सारी बॉडी और ठंड इट रेगुलेट्स टेम्परेचर और इट बैलेंस और मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो फिक्र ये पे प्लांटस मज तम टेम्परेचर वारिया ज़्यादा ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस ये वाटर सर फॉलन पे इट सेव्स प्लांट फ्रॉम हाई टेम्परेचर तवे नेसेसरी इवल गो लिहाजा सेकंड फंक्शन इज ट्रांसपायरेशन। हालांकि उस सिलेबस में मन सिलेबस में कह यूनिटी डीप सोरी यूनिट मगर थोड़ा बहुत वो तुम क्या। थर्ड इज कॉल्ड एज गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज। थर्ड फंक्शन इज गैसियस एक्सचेंज। तो हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी जिंदगी के लिए कौन सा चाहिए? ऑक्सीजन। तो जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है वहां हम देखते हैं CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12 O6 प्लस O2, है ना। ये O2 बाहर निकलता है प्लांट से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में घुस जाता है। तो ये कहाँ से घुस जाता है? ये लीफ जो है, इस लीफ में स्मॉल पोर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्टोमा या स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हमने देखना है लेबॉरेटरी में कर तो तम साथ हाव तम स्टोमेटा तो यम स्टोमेटा यम पोर्स कह गैसेस एक्सचेंज गसन। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द प्लांट, ऑक्सीजन कम्स आउट ऑफ द प्लांट and carbon dioxide goes into the plant. But सानी body में क्या अंदर गया oxygen, carbon dioxide comes out. But in plant there is reverse. Carbon dioxide goes into plant for photosynthesis and oxygen comes out of the plant during photosynthesis. So that is called as gaseous exchange. So these are primary functions. Number 1 photosynthesis, number 2 number 3 gas. वो कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, what are the primary functions of a leaf? ये मैं 3 पॉइंट्स लिया क्यों फुल मार्क। उसके बाद है सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन जो है मैंने ये भी कहा बताया कि कभी कभी चाहे लीफ हो या रूट हो या स्टेम हो, उसको प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो उस वक्त उस रूट में, स्टेम में या लीफ में मॉडिफिकेशन होती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो अच्छा फिक्र वो तम साथ सेकेंडरी फंक्शन करना। तो तरीके पढ़ना, द लीफ अंडरगोज मॉडिफिकेशन, डायरेक्ट में देखो स्ट्रक्चरल चेंजेस। द लीफ अंडरगोज मॉडिफिकेशन, डायरेक्ट में देखो स्ट्रक्चरल चेंजेस in order to perform secondary function. In order to perform secondary function. Number 1 storage. Number 1 लिखो storage। ये लीफ समझिए, लीफ जो है ये फूड मटेरियल अपने अंदर स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ऑनियन। ऑनियन खाया है आपने, इस गार्निश में क्या वन कुछ पार्ट क्या ना गलत स्टेम बाकी लीफ कवर कवर दे आर एक्चुअली लीव्स, दे स्टोर फूड मटीरियल। इथे पे बाकी क्या प्लांट्स यमन मज लीफ इट स्टोर्स फूड मटीरियल। कर फूड मटीरियल स्टोर तो वो वो क्या कैसे मज फूड मटीरियल स्टोर कर तो फूड मटीरियल पे यूटिलाइज कर, सो इट्स कॉल्ड एज स्टोरेज। नंबर 2 reproductive leaves. Reproductive leaves of plant oxygen that is called as bryophyllum. शायद ऐसे टेंस में नहीं बोलते हैं, सुना है bryophyllum। ये bryophyllum it is actually pteridophyte. It is actually pteridophyte। ये हमने पढ़ना है, जब हम लोअर पार्ट में पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताऊंगा। This is called as bryophyllum. This is actually pteridophyte। इस प्लांट के ऊपर लीव्स होते हैं, इनमें यहाँ पर नाजिस होते हैं। जब ये लीव्स उस प्लांट से डिटैच होते हैं, नीचे गिरते हैं, तो यहाँ पे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो उन बर्ड्स से
सेकेंडरी रूट एडवेंटेशियस रूट्स निकलते हैं और लीफ निकलता है, तो उससे नया प्लांट बनता है। तो यानी जो लीफ है ये जब डिटैच होता है, नीचे गिरता है ज़मीन पर, तो जो इसके नाचेस होते हैं यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, तो उन बर्ड से क्या बनता है? एडवेंटेशियस रूट्स। तो रूट्स ज़मीन के अंदर दाखिल होते हैं और ऊपर से लीव्स निकलते हैं और इट फॉर्म्स न्यू प्लांट। दिस आल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो एट दैट टाइम दिस लीफ परफॉर्म्स रिप्रोडक्शन। तब उनमें रिप्रोडक्टिव लीव्स वो इन सम प्लांट्स फॉर एग्जांपल Bryophyllum, it helps in vegetative propagation. It helps in vegetative propagation. Example क्या लिखो? Bryophyllum। ठीक। Next लिखो protection from grazing animals. Grazing animals by farming thorns. Example है ओपन शिया लिख दिया, कैक्टस जानना चाहिए। कैक्टस यानी इन सम प्लांट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स बाय फार्मिंग थॉर्न्स। देखो एग्जांपल इज कैक्टस। नेक्स्ट पाइनस आपने देखा होगा, पाइनस छपाई कथन यार्डिकुलस, यर्ड में पाइन, तो उसको हम पाइनस कहते हैं बॉटनी में। तो पाइनस के लीव्स कैसे होते हैं? नीडल लाइक है ना, नीडल लाइक। अत मज क्या कम लीफुक साइज रिड्यूस गसान एंड इट बिकम्स थिक। वाई? इन ऑर्डर टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। क्या प्लांटन मन लीफ ब्रॉड, लीफ थिन, यह फ्लैट, वो अपर गई ज्यादा ट्रांसपायरेशन क्या स्टोमेटाइसन पे कह। बट इन पाइनस द लीव्स गेट रिड्यूस्ड forming needle-like structure. Yeah, in this cactus open shade, it forms supine-like structure. It forms function to reduce loss of water. क्या है ये लीफ साइज है वारिया बोर्ड ट्रांसपेरेशन क्या कैसे कैसे वारिया ज़्यादा पता कर लीफ साइज रिड्यूस करो ट्रांसपेरेशन क्या कैसे सो गैस कम। So in some plants the size of leaves gets reduced. In some plants the size of leaves get reduced. For example, in pinus to form needles, and in opentia, OPNTIA, and in opentia to form supinus. This helps plants to reduce loss of water. In some cases, the leaves act to float. क्या plants, aquatic plants, क्या टेरिडोफाइट्स ऐसे आबस में तिमन मज लीफ बनावन तिम लीफ फ्लोट कर ताकि यह सिंक इन टू द बॉटम ऑफ दिस वाटर बॉडी यह रोज फ्लोट कर या अत मज बयानसी मेंटेन कर या यह फ्लोट करने में मदद कर। सो इन सम प्लांट्स इट परफॉर्म्स फ्लोटिंग in some plants which are found in water. The leaves act as floating leaves
floating leaves to maintain the buoyancy of a plant. The buoyancy of a plant. वो ये हेकन सिंक गसित कह सिंक नहीं हो सकता है बल्कि फ्लोट कर सकता है. वो ये मन चीज वन, these are called as floating leaves. These are called as floating leaves. अभी मैंने बता दिया पिचर प्लांट. यहाँ मॉडिफिकेशन लीफ की होती है. इट फॉर्म्स ए पिचर लाइक स्ट्रक्चर. इट हेल्प्स द प्लांट टू डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू गेट नाइट्रोजन, टू ओवरकम द डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन. बताया ना मैंने ये लीफ बनाना पिचर, और जब इंसेक्ट उसमें घुस जाता है तो ये प्लांट जो है एंजाइम्स रिलीज करता है, तो एंजाइम्स को डाइजेस्ट करते हैं, तो नाइट्रोजन डिफिशिएंसी जो है वो ओवरकम होती है. इन सम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, the leaf gets modified into pitcher or blade. Into pitcher or blade, which trap insects, trap insects, and the plant digests this insect to overcome nitrogen deficiency. And the plant digests this insect, to overcome nitrogen deficiency. So these are the secondary functions of a leaf, या इसमें जनरली प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी फंक्शंस. आपको कोई साथ में क्या आपके एग्जाम में आ सकता है, कभी कभी बोर्ड में एग्जाम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए लीफ. वो उस वक्त आपको सारी फंक्शन लिखने हैं, प्राइमरी फंक्शन एज वेल एज सेकेंडरी फंक्शन. अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्राइमरी फंक्शन, उस वक्त आपको 3 फंक्शन लिखने, अगर सेकेंडरी फंक्शन उस वक्त आपको एडिशन रोल जो है उसका लीफ का वो लिखना है. So this was all about leaf. Any question regarding this? This was all about leaf. Now we will start new topic. इतना ही पढ़ेंगे आज, इतना ही. चलो आज के लिए इतना ही. कल हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस. उसी के साथ हम फ्लावर पे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्लावर का, तो वो कल ले लेंगे. थैंक यू.